Hello everyone, welcome to Physics for All. Today we are going to discuss properties of electric field lines. The space around an electric charge in which the influence of that charge can be felt by any other test charge is known as electric field. And we represent electric field with the help of lines. So we draw some electric field lines. So the property of the electric field line goes like this. First one, tangent at a point of the electric field line gives the direction of the electric field at that point. Here you can see that we have drawn a curve. Okay, so this is an electric field line. Now you know how do we draw a tangent. We consider some point and then we draw a perpendicular line. So if we draw a tangent at a point, so here P is the point, and we have drawn this tangent, this arrow, which represents EP, you can see here. This gives the direction of electric field at that point. So if we draw a tangent, tangent is always drawn on the surface. Okay, whatever point you consider on the curve, just a straight line that we draw with the smallest angle. Okay, so here you can see the curve is going in this direction. Even the direction, you have to draw the tangent in the direction of this curve or the line. So here we have drawn, but only difference is that this electric field line is a curved line and this tangent is a straight line. So electric field line किसी भी फॉर्म में हो सकता है. Here वो एक कर्व्ड फॉर्म में है, लेकिन जो टेंजेंट है वो हम हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ड्रॉ करते हैं और वो एक स्ट्रेट लाइन होता है. सो स्ट्रेट लाइन हमें डायरेक्शन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड की एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. सो ये एरो डायरेक्शन दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की at point P. Similarly, this arrow is representing the direction of electric field at point R. So this is what we mean by the tangent at a point of electric field line. Second property, electric field lines start from positive charge and terminate at negative charge. So you can see here that we have this positive charge and all the electric field lines, they are just emerging out of it. सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से बाहर निकल रही है पॉजिटिव चार्ज में. सो वी से दैट दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज. और आप देख सकते हैं दैट ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव नेगेटिव चार्ज एंड ऑल आर एंटरिंग इन दिस नेगेटिव चार्ज. सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां से भी आ रही हैं दे आर जस्ट एंडिंग, you can say, at negative charge. So electric field lines, they start from positive charge and end at negative charge, and they can never form closed loop. क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होके नेगेटिव पे खत्म होती है तो क्लोज लूप तो बना ही ना. यहाँ पे आप कहीं भी देख लो, क्या कोई क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है? नो. ये अगर हम इस पर्टिकुलर लाइन की बात करते हैं तो ये लाइन यहाँ से शुरू हो रही है and it is ending here. तो लूप तो ना बना. क्लोज्ड लूप क्या होता है? जब वो पूरा का पूरा क्लोज्ड हो, which is not there. Third property is electric field lines are found to originate and terminate radially from the point charge. Radially means along the radius. Now you can see here, if we have this positive charge and electric field lines, they are emerging out of the positive charge, and यहाँ पर we have both positive and negative charges. So electric field lines, they are just coming out of positive charge and they are going in the or ending at negative charge. But जो भी हो रहा है that is happening along the radius. हम इसे radially बोलेंगे. You can see here कि जो electric field lines है ये circular pattern में arrange है और ये सारे along the radius एक्ट कर रही है. यू कैन सी हियर, अगर आप इस पूरे चीज को, ये जो आप एक फिगर देख रहे हो, इफ यू कंसीडर इट टू बी सर्कल, तो ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे अपीयर टू बी रेडियस. ठीक है, इवन इस साइड भी, यहां भी यू कैन सी. सो रेडियली का मतलब होता है गोइंग फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड along the radius.
जैसे पॉजिटिव चार्ज के केस में दे आर मूविंग फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड और फ्रॉम सर्कमफ्रेंस टू इनवर्ड अलोंग द रेडियस। तो नेगेटिव चार्ज लाइक हेयर, नेगेटिव चार्ज के केस में वो सर्कमफ्रेंस से दे अपीयर लाइक कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है, इट इज द आउटर बाउंड्री ऑफ द सर्कल, सो वो सर्कमफ्रेंस से दे आर मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर। सो दिस इज व्हाट वी मीन कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे अपीयर to originate and terminate radially from the point charge, वो along the radius act करती हुई दिखती है। Fourth property is in a uniform electric field, the field lines are straight, parallel and uniformly spaced. So you can see this figure A, it represents a uniform electric field. So all the field lines, they are straight, they are not curved, okay, they are just straight lines, they are parallel. See, all these are parallel to each other. They are going in one particular direction and uniformly spaced. So these arrows represent that they are equally spaced. Okay. Whereas in non-uniform electric field, you can see that they are not straight, they are not even parallel and not uniformly spaced. So अगर uniform electric field होगी, then all the field lines वो straight होंगी, parallel होंगी और equally spaced होंगी. उनके बीच का जो space है, that would be same. But non-uniform electric field lines वो किसी भी random direction में होंगी, straight भी नहीं होंगी, they might be curved and so on. Fifth property is the degree of closeness of electric field lines gives the relative strength of the electric field. यानी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी वहां पर उतनी ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जहां पर वो थोड़ी सी लूज होंगी, वी कैन से कि उनमें गैप ज्यादा होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी वीक होगी. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ प्लेस इज स्ट्रॉन्ग इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड एट दैट प्लेस. तो आप यहाँ देख सकते हैं इस पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्वाइट क्राउडेड. ठीक है, जितना वो चार्ज के क्लोज हैं वो क्राउडेड है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो. एंड एज दे मूव अवे फ्रॉम द चार्ज वो देखो लूज होते जा रहे हैं, उनके बीच का गैप बढ़ रहा है. तो इस सिचुएशन में स्ट्रांग होगी, राइट. इवन इस सिचुएशन में भी स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी, यहाँ पर भी हमारे पास स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एंड हियर ऑल्सो वी वुड बी हैविंग स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड. बट जैसे जैसे वो चार्ज से दूर जा रही है, so you can see at this particular region or at this particular region they are not that much crowded, so that means here we have weak electric field. So here strong electric field, this is also strong electric field, and this is weak electric field. Understood? Where the lines, the electric field lines are crowded, that tells us that electric field is stronger at that point. And where they are not that much crowded, they are loosely spaced and there is quite big gaps between electric field lines, at that point electric field is not that strong enough. Okay, so the strength of electric field has direct relation with the degree of closeness of electric field lines. The closer they are, the crowded they are, the more stronger the electric field is at that point. Sixth property is that no two electric field lines can cross each other. If they cross, it would mean that there are two directions of electric field at that point. We already told that the tangent at a point of electric field line gives us the direction of electric field. That was our first property. अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और उसके किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, सो दैट टेंजेंट वुड गिव अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. अब अगर हम कह रहे हैं कि वी हैव टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड दे आर एक्चुअली क्रॉसिंग ईच अदर, जैसे कि यहाँ पर ये 1 and 2, दे आर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड दे आर क्रॉसिंग ईच अदर. तो अब जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पर हमें एक पॉइंट मिल गया. अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे वी कैन ड्रॉ टेंजेंट्स, बिकॉज दिस इज व्हाट वी नो कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे किसी भी पॉइंट पे वी कैन ड्रॉ टेंजेंट, और वो टेंजेंट क्या करेगा, दैट वुड गिव अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. तो अब अगर हमारे पास ये एक कॉमन पॉइंट है, here this is our common point, और हमने इस पॉइंट पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए,
क्योंकि ये वाली जो नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये इस डायरेक्शन में जा रही थी, तो हमने उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, बिकॉज टेंजेंट इज ऑल्सो ड्रॉन इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, बट इट इज ए स्ट्रेट लाइन विद द स्मॉलेस्ट एंगल विद द कर्व, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन आ गई ये, यू कैन सी विद द एरो, so this arrow is giving us the direction of this electric field E1. अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है नंबर 2, हम इस पे भी बना सकते हैं टेंजेंट, इसके लिए भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एंड दैट टेंजेंट इज दिस एरो E2. अब ये E2 क्या है? दिस इज अगेन टेलिंग अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपवर्ड्स, यू कैन सी, एक तो हमारे पास ये एरो है जो कि अपवर्ड पॉइंट कर रहा है, और दूसरा एरो उसी पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे डाउनवर्ड एरो कर रहा है। सो दैट मीन्स कि अगर हम इस पॉइंट पे कोई टेस्ट चार्ज रख दें Q, दैट वुड मूव इन 2 डिफरेंट डायरेक्शन, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1 के अकॉर्डिंग दैट वुड टेक इट अलोंग दिस डायरेक्शन, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के अकॉर्डिंग that force, that electric field would bring that charge in this direction. तो एक ही पॉइंट पे चार्ज की 2 डिफरेंट डायरेक्शंस हो गई टू मूव, एंड दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल। चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है, बिकॉज इट्स रिटन दैट इफ दे क्रॉस इट वुड मीन दैट देयर आर 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो हाईली डायरेक्शनल होती है, उसकी तो एक फिक्स डायरेक्शन होती है। तो इस इंटरसेक्शन के कारण वी are getting 2 direction, which is just not possible. So that's why we say that no 2 electric field lines can cross each other. This is our 6th property. 7th property is, if the electric field in a given region of space is 0, then electric field lines do not exist. So that means if E is 0, we cannot have any electric field line, because we know कि electric field lines basically क्या है? We draw them, though they are not visible as such. हम ड्रॉ करते हैं जस्ट टू रिप्रेजेंट द फील्ड ड्यू टू ए चार्ज प्रेजेंट। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन में होती है ड्यू टू एनी चार्ज प्रेजेंट देयर, तो उसके कारण जो फील्ड का स्प्रेड होता है वी डिनोट इट बाय अ लाइन, सो वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बट अगर वहां पर चार्ज ही नहीं है तो वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी नहीं होगी। जैसे हम यहाँ पर सारी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो कर रहे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रेजेंट हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस के कारण ही फील्ड जनरेट होती है, एंड उस फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बट अगर चार्ज ही नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी, देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो ही नहीं सकती, दैट्स इम्पॉसिबल। So this is what our 7th property means. 8th property is, the electric lines of force do not pass through the conductor. Therefore electric field inside the conductor is 0. जहां जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती है, बट किसी भी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो सकती। तो ठीक है, बाहर वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड, so here we have electric field which is non-zero, but inside we have electric field which is 0, or we can say कि inside the conductor we have no electric field, because field lines कंडक्टर के थ्रू पास नहीं हो सकते, वो सिर्फ कंडक्टर के सरफेस को टच करके निकल जाते हैं, उसके अंदर एंटर नहीं कर पाते। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी रीजन में पहुंच नहीं पा रही, so that means वहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं हो सकती। दिस इज आवर 8th property. 9th property is that electric field lines contract longitudinally because of attraction between unlike charges. So here in this picture you can see 2 unlike charges. One is positive charge plus Q and another one is negative charge minus Q. So they are equal in magnitude but still opposite in direction, and we know that unlike charges attract each other. So definitely there would be attraction between them, और उस attraction के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ओके, बिकॉज यू कैन सी कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, सो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक तरह से स्क्वीज होंगी उनके बीच में। बट वो कैसे स्क्वीज होती है?
longitudinally. तो along the length आप देख सकते हैं कि वो squeeze हो रहे हैं along the length. They are contracting along the length. अगर इस तरह से spread होना था field lines को, तो अब वो कैसे spread हो रहे हैं? Like this. और वो longitudinally contract होना शुरू हो जाएंगे because of attraction. वो और ज्यादा narrow होते जाएंगे. तो ये along the length change आ रहा है. So they are contracting longitudinally. Whenever we have unlike charges and due to attraction between them, this thing would happen. Now the 10th property says that electric field lines exert a lateral pressure because of repulsion between like charges. Now you know that like charges repel each other. So obviously उनके बीच में repulsion होगा अगर हमारे पास दो similar charges हैं. So here in this figure, this right hand side, you can see that we have two charges, plus Q and plus Q. So both are equal, both in magnitude as well as direction, if we say. So there would be repulsion between them. तो अब repulsion में क्या होता है? वो एक दूसरे को push करते हैं, pressure लगाते हैं. तो वो pressure जो है वो laterally लगेगा, यानी कि sideways. आप इस चीज को चेक कर सकते हैं if you have bar magnets with you at home or you can purchase it. They are easily available in market. You purchase those bar magnets and you try to bring the like poles toward each other. तो क्या होगा कि whenever you try to bring two like poles closer, तो वो आपके हैंड को पुश करेंगे साइडवेज. वो साइडवेज पुश होगा. तो इनकी टेंडेंसी क्या होगी कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल तो कर रहे हैं. तो वो रिपल्शन क्या है कि वो इसको साइडवेज मूव करेगा. Here you can see we had two magnets और उनका like poles को we tried to bring closer. तो क्या हुआ कि वो sideways move कर गए. If you just place them, तो उनमें से कोई एक sideways move कर जाएगा. तो वो कैसे हुआ कि वहां पे pressure लगा और वो pressure कैसा है? Lateral pressure. ठीक है. So these field lines exert lateral pressure because of repulsion. तो वो lateral pressure में क्या होता है कि वो pressure along the side लगता है, तो वो sideways move कर जाते हैं. So these two pics, they basically represent both our 9th and 10th property. 9th property क्या थी कि when we have unlike charges, so definitely there will be attraction. तो वो attraction कैसे होती है कि उस attraction में जो field lines है, they would contract longitudinally. So longitudinally means along the length they would start contracting. So यहाँ पर you can see कि ये जो contraction है, that will start. Okay, here it will start. And if you have like charges, which will definitely repel, so in that case, the electric field line, they exert a lateral pressure, which is pressure being exerted sideways, okay, to represent the repulsion. So this is all about properties of electric field lines. We discussed 10 properties and they are really important and easy to understand. So you have to keep them in mind because these properties actually help us to solve many numerical problems. Okay, so this is an important though an easy topic. So that's all for today. Thank you.